कि ना हमारे GLA यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में जो प्लेसमेंट्स असिस्टेंस है वो खाली जॉब प्रोवाइड करने तक नहीं रहता, हम उनके कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करते हैं. जैसे विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 2 years वी हैव रीच्ड द माइलस्टोन ऑफ 5,000 स्टूडेंट्स विद अस. 5,000 in just 2 years. जस्ट 2 years. जो हमारा GLA फैमिली है उसमें जो हमारे चांसलर सर हैं, जो हमारे प्रो चांसलर सर हैं और हमारे CEO नीरज सर हैं, उनकी एक ही सोच है, फिलंथ्रॉफी सोच. जो हमारे ये प्रोग्राम्स हैं वो बहुत अफोर्डेबल हैं. सो दैट बिकॉज उनका मानना ये है कि एक छोटा सा वर्ड है इन संस्कृत, विद्या इज़ अ सर्वधन. तो वो कहते हैं कि ये सर्वधन है, मतलब विद्या सबके लिए है. तो वो उनका कहना यह है कि जब विद्या सबके लिए है तो सब तक पहुंचनी भी चाहिए. So hello and welcome back everyone to another episode of Experts की राय, and today we are here at GLA University Online और आज हम यहाँ के CEO एंड यहाँ के डायरेक्टर दोनों से मिलने वाले हैं. दोनों से बहुत से सवाल जवाब और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अबाउट दिस यूनिवर्सिटी और आपको क्यों इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए. और आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर पीयूष मित्तल जी. So today we are here at GLA University Online and we have with us the director of GLA Online, Dr. Piyush Mittal ji. Welcome sir, welcome to our show. Yeah. Thank you very much for inviting me to this particular session of Experts Ki Rai, and I'm glad to be here. So sir, we really want to know about your complete career journey and how you land up in GLA Online as the director. Yeah. So I started my career way back in 1995, where I started my career with as a banking and financial services professional, and I started working with the banks, which is a prominent banks. I worked 3 banks. Is Bank of Punjab Limited, and then I moved on from there to ICICI Bank and HDFC Bank. So up to for almost 14 years I worked in the banking industry, and after that I moved on to start my entrepreneurial journey, where I had a very small stint, but as I always had a passion for teaching and training, in 2008 I decided to hang my boots of banking industry and moved on to teaching and training and started my academic journey in 2009 onwards. From there I worked with some of the renowned institutions, which were it's about like ad hoc faculty and Bennett University. I worked with the SRM University, and then I worked with the Datta Mege Institute of Medical Sciences in their Center for Distance and Online Education. And I also had a small stint with Sharda University Online, where I was setting the entire session over there, the entire department over there. The very interesting story of that, how I landed up in GLA. So I was working with Sharda University and setting up their entire department, and then one day I got a call from GLA that our respected CEO, Mr. Neeraj Agarwal, wants to meet me. Although I was not very keen to move on from my the previous place. So how I land up in GLA is a quite interesting story, you can say. While I was in Sharda University setting up the entire department of Center for Distance and Online Education, I got a call from one day from GLA HR department, and they said our CEO, Mr. Neeraj Agarwal sir, wants to meet me. As I was going pretty okay with the Sharda, I actually refused to meet him. But then, the HR department convinced me to have a 10 minutes meeting with CEO sir, Mr. Neeraj Agarwal. And when I come and meet him, the way he told me the things, the vision, the dedication, the sincerity toward this GLA Online, he told me everything. I could not resist myself, and after 2-3 meetings with him, and where I got totally convinced that it is the right place for me to work upon,
under the the leadership of Mr. Neeraj Agarwal sir, who is the CEO of GLA University, and I accepted the offer, and here I am with you all talking about this. So this is my entire journey of 25 years is there, and where I now reach up to this heading this department in GLA You have University. very long and amazing journey Yeah. in different universities and departments. Amazing. Thank you. So sir, we know that GLA University has a very good name. हम रेगुलर एजुकेशन की बात करें तो, एंड आई एम पर्सनली फ्रॉम आगरा, तो वहाँ पे तो काफ़ी नाम है. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो. एंड आई जस्ट वांटेड टू नो कि इज़ इट द सेम फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एज वेल? Yes, of course. See, students, or I should say learners of GLA University on conventional mode, shown a trust on GLA brand or the GLA family for years to years. It is almost more than 1 decade then the students coming to GLA University, and then they are putting their trust on it. And the same trust they are put in GLA online also. So if not to say too much about it, but within a very short span of time of 2 years, we have reached the milestone of 5,000 students with us. 5,000 in just 2 years. Just 2 years. Great. And that to be not only the most popular programs of like MBA and MC. We have the people in a programs like BCom, BBA, BCA, everywhere. And then the span it is there, it is way. So we You are also offering both UG and PG programs in online. Yes, we are offering both UG and PG program in our online as well as offline. But in online, we have 5 programs, 3 in UG, which is BCom, BBA and BCA, and 2 programs we have in a PG, which is MBA and MCA. So these program is being liked by so much our learners. In fact, I should say that we are very thankful to the GLA students who actually spread the words among the society, their known ones and everyone, that we are getting so many admissions through the referrals of them, and we are able to achieve a feat of around 5,000 students with us. And getting admission through reference is actually a big achievement. Yeah, it is very much. Word of mouth is one of the biggest marketing strategy for any organizations, be it an academic organization, be it a professional organizations. I remember my initial days of when I was in a bank, we used to tell people about our bank so that more and more accounts we can have, more and more fixed deposits we can have. The same way here in GLA University, their own people, whether it's a faculty, whether it's the existing students, whether it's the previous students, which we call them alumni, is spreading the word to the entire nation of. That's actually a very big thing. Yes. And I just wanted to add one thing, that even the programs are very pocket friendly, and that is something I really like about this university. I know the university is very good, and the programs are pocket friendly, then it's good. More and more students can come to the university and take admission. Yes, it is there. So we the programs has been made in such a way that it's increased the knowledge and skills of the learners. और जो हमारा GLA फैमिली है, उसमें जो हमारे चांसलर सर हैं, जो हमारे प्रो चांसलर सर हैं और हमारे CEO नीरज सर हैं, उनकी एक ही सोच है, फिलैंथ्रोपी सोच. जो हमारे ये प्रोग्राम्स हैं वो बहुत अफोर्डेबल हैं. सो दैट बिकॉज उनका मानना ये है कि एक छोटा सा वर्ड है इन संस्कृत, विद्या इज़ अ सर्वधन. तो वो कहते हैं कि ये सर्वधन है, मतलब विद्या सबके लिए है. तो वो उनका कहना यह है कि जब विद्या सबके लिए है तो सब तक पहुंचनी भी चाहिए. वो एक इस तरीके से विद्या का होना चाहिए कि हर इंसान, हर स्टूडेंट, हर वो लर्नर जिसकी ये इच्छा है कि वो आगे बढ़े, वो पढ़े, वो उसको अफोर्ड कर सके. तो इसीलिए हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो इतने अफोर्डेबल हैं कि कोई भी उसमें एडमिशन ले सकता है. So whether you comes under tier 1, tier 2 or tier 3 category,
all of you can take admission in GLA online. So sir, अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो अब जितनी हमने अवेयरनेस फैला दी है उस हिसाब से एवरी स्टूडेंट नोस कि देयर इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रूवल्स अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से बताइए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, किस किस अप्रूवल्स को रहना चाहिए अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन या रेगुलर किसी भी मोड ऑफ एजुकेशन से जा रहे हैं। ओके, सी अप्रूवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वेदर इट इज़ NAC, वेदर इट इज़ UGC, वेदर इट इज़ डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, वेदर इट इज़ AICT, ये लोग सब एक पैरामीटर्स फिक्स करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपको चलाना है, बल्कि उससे पहले अगर आपको यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट करनी है तो आपको इन पैरामीटर्स को फुलफ़िल करना होता है। और उसके बाद अगर आपको कोई डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करना है या डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो आपको कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स को फुलफ़िल करना होता है। सो ये पैरामीटर्स खाली बनाए नहीं गए हैं, इन पैरामीटर्स का एक पर्टिकुलर पर्पस है। वो पर्पस है क्वालिटी, कि आप ये पैरामीटर जब फुलफ़िल करते हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी का, आप अपने प्रोग्राम्स का एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, सेट करते हैं। तो जब हम इस तरीके के अप्रूवल्स लेते हैं तो हमें उन पर्टिकुलर क्वालिटी पैरामीटर्स को कंप्लीट करना पड़ता है, अपने यूनिवर्सिटी में, अपने प्रोग्राम्स में इम्बाइब करना पड़ता है और वो एक फ़ीचर्स के रूप में निकल कर आते हैं। अब मैं अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करूं तो ऑनलाइन एजुकेशन में वी नीड अप्रूवल फ्रॉम UGC विच इज़ डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। तो अगर मैं इन पैरामीटर्स के बारे में बात करता हूं तो ये let's say मैं talk about online education because we are talking about a GLA online. GLA online has taken specific approvals from Distance Education Bureau, University Grant Commission, AICTE. So what approvals been given to us? First of all, when AICTE give approval, they see whether we are accumulating the proper course structure, program, syllabus, we have faculties and as well as space. कहाँ हम अपना सेंटर फॉर डिस्टेंस इन ऑनलाइन एजुकेशन को सेटअप करने जा रहे हैं, क्या हम उतने स्क्वायर फीट उसमें दे रहे हैं जो AICTE ने अपने स्टिपुलेट किए हैं। देन वी टॉक अबाउट अ डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। जब हमें AICTE का अप्रूवल मिल जाता है तो हम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को अपने प्रोग्राम सर्टिफाई करने के लिए भेजते हैं। जब वो हमारे पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते हैं सारे प्रोग्राम्स की, तो वो उस पर अपने ऑब्जर्वेशंस भी देते हैं। अगर उनको लगता है कि हम कोई पैरामीटर को सक्सेसफुली अब कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो वो अपना अप्रूवल नहीं देते। जब हम उन सारे पैरामीटर्स को कंप्लीट करते हैं, चाहे वो हमारे कंटेंट के लिए बात है, चाहे वो हमारी प्रेजेंटेशंस की बात है, या हमारी फैकल्टी की जो मिनिमम नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ होना चाहिए उनकी बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमने अप्रूवल्स लिए हैं क्योंकि हमने वो पूरे स्टिपुलेटेड पैरामीटर्स को कंप्लीट किया है। सो आज GLA यूनिवर्सिटी के पास AICTE, UGC, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से पूरा का पूरा अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट करके हमने लिया है। एंड रिसेंटली वी हैव बीन अवार्डेड NAC A+, वेयर वी गॉट 3.46 ऑन अ पैरामीटर ऑफ 4, which is also itself is a stamp of quality on GLA university standards of the programs and the quality of the university also. So that is why these approvals are very important. I would say learners should look into these approvals before taking admission into any university, whether it's offline, whether it's online. They should check at the website of the university, they should check at the website of the UGC also and see whether the approvals has been taken or not. So again I'll say this, approvals are a must and plays a very important role in the quality parameters. And again it's very hard to I mean there are very less universities that has NAC accreditation. Yes. So it's hard and We are proud to have this stamp of recognition with us. Okay. So sir, there is this one question every students ask because they have this some kind of doubt amongst the online education. They ask that whether their degree will be valid for government jobs or not if they pursue any course online from GLA. See,
I also heard these many, the clouds of doubts and rumors that if the degree has been taken through online education, it is not valid for government job or private companies are not accepting it. But actually में ऐसा कुछ नहीं है. UGC ने already एक notification निकाला हुआ है in the month of March 2022, and where they said it very clearly that all the degrees given in form of online education or open and distance learning, they are equivalent to conventional mode of degrees. आप उसको कैंपस में रह के पढ़ते हैं या आप उसको ऑनलाइन रह के पढ़ते हैं, जो डिग्री आपको मिलती है दे ऑल आर इक्विवेलेंट. They have no biasness or any kind of a differentiation in any kind of a job to apply, whether it's a government or private organizations. So GLA University's degrees which are coming on online mode of education is as equivalent to as any other universities or any other conventional mode of teaching, equal to them. So your degree will be valid for आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, ये एक्सेप्ट होगी, राइट? एक्सेप्ट होगी, 100% एक्सेप्ट होगी if any organization, whether it's a government organization or private organization, deny to accept these degrees. A student has a full right to make a complaint in UGC or in the Ministry of Education about those organizations. So sir, अभी कुछ महीनों पहले I guess एक UGC का नोटिस आया था फॉर द फीस रिफंड. लेट्स से कि अगर मैंने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एंड आफ्टर फ्यू डेज मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना है, या फिर मुझे उस यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा, तो आई कैन टेक मतलब मैं अपना एडमिशन कैंसिल करवा के वहाँ से फीस रिफंड करवा सकती हूँ. तो ये फैसिलिटी UGC ने प्रोवाइड करी. But still there are some universities that are denying the fact, and ऐसे बहुत सी complaints भी मेरे पास आई, बहुत सारे comments थे students के. तो is GLA online following this UGC guideline? Yes, of course. See, we got all our permission from the statutory body, University Grant Commission, which short form we call UGC. And whenever they issue any notifications, I don't think so any university in India which go beyond those notification and consider themselves to be above than that. So same way GLA University online is 100% following that notification. It is there is a slab is been given in that particular notification that at what stage student will get what percentage of their fees refund. Yes, we are very much following for it. Although we are very lucky that we don't have that kind of a cases much with us, but yes, we are 100% following it because GLA University believe in following all the stipulations laid down by any statutory body, not to deviate from it. इधर उधर नहीं जाना है, जो बोला गया है हमें वो करना है. और GLA University whether it's a conventional mode offline और चाहे वो online का है, हम वो हर चीज़ rules and regulation को follow करते हैं जो हमें हमारे प्रोग्राम्स चलाने के लिए बना कर दिए गए हैं statutory bodies से. So sir, I have another question from students only, and that is the biggest one कि प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है या नहीं GLA ऑनलाइन में? यस, ये आजकल बहुत बड़ा क्वेश्चन है. बहुत बड़ा क्वेश्चन. हालांकि कई बार मुझे थोड़ा आई फील अमेज्ड कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्स के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन प्लेसमेंट के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं. और इसीलिए GLA यूनिवर्सिटी ने, GLA यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ने एक बहुत स्पेसिफिक, हमने इसको एक एक्टिविटी माना और हमने उसके लिए पूरी तैयारी की. वी हैव अ प्रॉपर प्लेसमेंट सेल. प्लेसमेंट सेल ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी एडमिशन्स लेते हैं उनका पहले पूरा प्रोफाइल लेते हैं, देखते हैं कि वो पर्टिकुलर किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या वो किस इंडस्ट्री में मूव करना चाहते हैं. सो वी डू ऑल दिस थॉरो रिसर्च ऑन द बेसिस द प्रोफाइल ऑफ आवर लर्नर्स.
उन लर्नर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ध्यान रखते हुए हम उनको अपनी प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। प्लेसमेंट असिस्टेंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हम उन्हें सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं। सो इन प्लेसमेंट असिस्टेंस हम अपने लर्नर्स का पूरा प्रोफाइल थॉरोली एनालिसिस करते हैं एंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट हम उनको प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं। प्लेसमेंट असिस्टेंस यूजली देखा जाता है कि भाई हमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, लेकिन हमारे GLA यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में जो प्लेसमेंट असिस्टेंस है वो खाली जॉब प्रोवाइड करने तक नहीं रहता। हम उनके कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम कैरियर प्लानिंग करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने कैरियर को आगे प्लान करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, और फिर हम उनकी हेल्प करते हैं उसमें उनका रिज्यूम बिल्डिंग में, कि उस हिसाब से वो अपना रिज्यूम बिल्ड कर सकें कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो जाना चाहते हैं, क्या रेलेवेंट स्किल्स हैं जो उनको हाईलाइट करनी है, किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को दिखाना है। एंड देन हम उनको हेल्प करते हैं मॉक इंटरव्यूज़ में। तो उनके मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को समझ आता है कि अगर वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है तो वहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके की उन्हें उनके आंसर देने हैं, किस तरीके से अपनी नेगोशिएशन करने हैं, वर्थ को प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें हमारे प्लेसमेंट असिस्टेंस के अंदर आती है। प्लेसमेंट असिस्टेंस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए हम उनको पूरा का पूरा एक होल एक्टिविटी बंच देते हैं, नॉट जस्ट अ प्लेन वनीला कि भाई अच्छा ठीक है ये 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अप्लाई कर दीजिए, हो गया नहीं हुआ तो ना से, वो चीज़ हम नहीं करते। दिस इज़ द फीचर ऑफ GLA यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। एंड सर एज यू सेड दैट ज़्यादातर एडमिशंस इज फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस के थ्रू, तो उसमें सबसे बड़ा रोल तो प्ले करते हैं एलुमनाई। And you also have mentioned that you have strong alumni network. So, how strong it is? Okay. So first of all, when usually universities talk about alumni, they said हमारे alumni हैं, लेकिन हम अपने alumni को alumni नहीं बुलाते, हम उन्हें बुलाते हैं gladiators, GLA gladiators, gladiators। तो हमारा स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो भी, और जो हमारे यहाँ से पास आउट होके जाता है वो भी, हम उसको ग्लैडिएटर्स बुलाते हैं। When the gladiators goes into industry, they reach everywhere. Yes. And if The I tell you the meaning of numbers, gladiator is also that only. yes. So when I tell you the numbers, you will be amazed. 30,000 plus gladiators are there in the industry itself. 30,000. 30,000 plus. So when I said word of mouth, now you can understand what is word of mouth when I talk about 30,000 plus gladiators. Those already that's a huge there number. in the industry. Some of them already achieve a status in the organizations on a top management, middle management, and they all know the quality of GLA because they passed out from there. And because here I would like to say, जो हमारे CEO हैं, Mr. Neeraj Agarwal, he is so much passion to get attached with the people or the learners who pass out from the university, और इसके लिए हमारे alumni meet होते रहते हैं, जिनमें हम जहाँ जिस पर्टिकुलर प्लेस पे सर जाते हैं, जैसे वो कभी कभी अपने मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, और लेट्स से any smaller places even he is going, he always invite alumni to come and meet him, to spend time with them, maybe on a lunch or on a dinner, or maybe a evening time to spend with Neeraj sir. And that is how we are still a well connected family of 30,000 people, and it's growing more, and that is strong army of gladiators we have. Very strong actually. So sir, we have talked about alumni, and we know the fact that in online education there are more of working professionals and less of freshers as of now.
So, are your programs are structured in a way that a working professional can easily continue the program as well as their job? Yes. See, the beauty of online education is this, and so that working professional can enhance their knowledge, they can enhance their skills without leaving their job. And GLA University Online is providing the courses which is very much flexibility for them to learn from anywhere. We provide them online everything through our LMS, learning management system, where they get their e-content in form of PPT, in form of recorded lectures, e-books, as well as we also take online classes on every evening of Saturday and Monday, Sunday morning. So these recorded, apart from recorded lecture, these live classes also get recorded and available them to in LMS. So when they come to this particular LMS, it is like a bunch of roses over there, that every rose has its own beauty. The PPT has been curated by our learned faculty, which when they curate it, they keep utmost care to provide the content in such a way that those who are reading it should not feel ये तो सब पढ़ा हुआ है यार, फिर से वही चीज़ आ गई. So it actually complemented with relevant examples from the industry, small case studies, caselets are there. So that is how we made our everything available to the online. Even when the learners has to take an admission, they are not supposed to visit our campus. Everything is happening online. The flexibility is there. They can study in the night at 12 o'clock, whether they can study at 5 a.m. in the morning, और अगर वो बस में जा रहे हैं तो अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो आजकल गाड़ियों में बड़े बड़े स्क्रीन लगे होते हैं, वो चाहें तो वो लेक्चर वहाँ पे रन कर सकते हैं और अपने लेक्चर सुन सकते हैं आराम से गाड़ी चलाते हुए. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ऑलरेडी देयर and the curricula is actually been vetted by the industry. So you're basically offering them LMS as well. Yes. And you're following the UGC 4 quadrant Yes. approach. See, when we prepared our LMS and the content been uploaded into that, we follow the UGC Distance Education Bureau's 4 quadrant policy, where the quadrant 1, 2, 3 and 4 has a different things. When we talk about a quadrant, it says we should provide e-content in form of the PowerPoint presentations, recorded lectures, then we should provide them assessments, assignments, case studies, discussion forum, and then FAQs are there for them. Even faculty is also available to take their classes on weekends on Saturday and Sunday morning. So we keeping in the mind that we should not deviate from those 4 quadrants, and in fact we are trying to give most than what is been put in there, the extra to all of our learners. Amazing, amazing. So at last, I want to know that why choose GLA Online, if you can sum up with this question. See, GLA has a legacy of more than 2 decades in education, and when we talk about GLA, it itself is a institution which is built on the trust of the learners. The learners who come to the campus in our Mathura, they see 118-acre sprawling campus over there. That inbuilt a trust into them. So people already know GLA. We are not supposed to tell them what is GLA, because as I told you, 30,000 plus alumni army is already there in the industry, in the entire India is there. So the advantage what comes with GLA is basically that experience what we have of education of more than 2 decades, where education earlier what depends on the books or the teachers were teaching through books, but now we have reached where the live classes are there, where the classes
available on LMS, on YouTube channels, and various places it is available over there. So when I say GLA online, we are giving an advantage of learner to first of all learn from anywhere. Second, the affordability. Third, when we talk about that, we do analysis of their profile and provide them placement activities, which does not only limited to job opportunities. We try to help them to make planning for their career. Some of them, it has been seen over my 25 years experience that I started from a bank and move on to academics. It happens with a lot of people. So it is like complete revamping of students. Yes, we try to give them what they always had in the heart but not able to do that. We give them that advantage when they come with GLA online. Amazing. So sir, that was insightful, quick, and talking with such an experienced person is an honor, and with the higher authority. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you for coming so to our much. show. I also like to thank you so much, and I would like to say our learners that this opportunity being given to me to speak in the experts ki rai is one of the best thing for me, where I am able to tell what is the benefits of online education is there and why GLA. Right, GLA. Thank you so much. Thank you so much.